Check the mic and make sure it sound right, boys. 3, 2, 1. Hello, and welcome back to the Arrow. And first of all, I want to say right now, like, share, and subscribe our video because I know if I see it and then at the end, probably most of you will not reach that part of my episode. So, like, share, and subscribe our channel and watch the podcast. Watch every episode at least 15 minutes. You never know what you get interested in. And now, coming back to our guest, today we have Mr. Jason Fernandez. Welcome to our podcast. And he's a fascinating human being. And when I first met him, I have not talked to him when I first met him, but his smile is like infectious. If you see him smiling, you will love to smile with him. And he's a very funny human being, and he has a very, what should I say, happy-go-lucky nature, and he will make everything quite beautiful around you. Even if you are sad or if you are frustrated about something, he will have a point of view about that you will think that it's not so bad, life is good. And just to give a summary about him in maybe one sentence, he's an engineer, he's a musician, he's a writer, he's a teacher. Now figure it out. I mean, he's literally jack of all trades. And when I said to him that you are jack of all trades, Jason, and he said to me that, well, in in these times, jack of all trades are actually required in this world. So, yeah, as I said, he's a fascinating human being, and we are quite excited to talk to him. And I would like, Jason, that first of all you introduce yourself to our viewers, and then we will start asking you about your life. Okay, thank you very much, Varun. First of all, I'm Jason Fernandez over here, and I absolutely don't agree with the way you have you've made such a big thing. Of course, thank you because I appreciate what you said, but I'm not what you have said. All that, but again, thank you very much. This is what humble people always say. I totally agree with you. But I agree on one thing. A smile is the most important thing that we all need to have. Uh, First of all, it is basically free, and by giving it, you're also getting, and you want that is the only thing that can make others smile. Now, without saying a word. So if you just want the other person to smile, you smile at that person, and that smile comes back to you. So that is a very important thing that we all need to carry. किसी का दिन बन जाता है यार, just with a smile. एकदम सही So बात है. yeah, so basically, thank you very much for inviting me for this show, and I've seen a couple of your podcasts, pretty interesting, and thank you very much. I would love to share my thoughts and views on this show. Thank you The very much. honor is all ours because, as I said even before we started recording, that every human being has something to teach us about life. And as I said, you teach us many things in various aspects of our lives. And as I will go ahead, the viewers will also understand that why we are so fascinated about you. So I am again welcoming you to our podcast, and we are so honored that you came to our podcast. Thank you very much. So let's directly dive into your life. Tell us, how did you start? How did you start as a kid? And tell us your journey through your life. Starting, I mean, of course, I was the only child, तो बहुत लाड प्यार से ना बड़ा हुआ हूँ. Of course, पिताजी का लात और माँ का बात ना, it was like that. हमेशा काम आते हैं. हाँ वो तो हाँ, so even वो इकलौता हो या like ना there are 10 people,
पिताजी का लात तो मिलना ही है, उससे हम लोग बड़े हो ही नहीं सकते. So coming back to my schooling, I did my schooling, and my father was working for an MNC, and he was working as a electrical winder, and he was a very Okay. good electrician and electrical winder. And of course, ना जैसे पहले होता था, like पिताजी मोची है तो लड़का भी मोची, कारपेंटर है तो ये भी कारपेंटर. And my father wanted me to become an electrician, so that was the thing. But he knew कि ये लड़का कुछ ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है, इसका कैपेसिटी नहीं है. हमारे सबके पापा यही Yeah, सोचते he थे. saw the result, 10th standard का result. Of course, I had managed to come first class, but my father knew इसको अभी I need to put him in a proper way. And at that time, we didn't have any choices. Now children have a lot of choices. We as parents, we have to do what the children want. But at that time, we didn't have our choices. I mean, whatever our parents selected for us, we had to take up. And there was this training center by the same MNC, and I was practically forced into it. Na? Means, though I had a lot of mechanical aptitude, what do you say, na? Because मेरा एक अंकल का गैरेज था, तो हर summer season, ना, instead of going and playing, my father used to put me in that motorcycle garage. So we knew a lot of things like tools, all the tools, names of tools, spanners, screwdriver, and grub screw, and no, practically we knew everything. Me and my cousins, of course. So when my father pushed me into that, unfortunately, he wanted me to become an electrician, and I got a fitter trade, which was actually beneficial for me because I was more inclined towards mechanical field. No? Right. Like my aptitude was more in mechanical, and I completed that course, which was an NCVT course. And of course, immediately after that, I did not get employed in that MNC. But दर दर के ठोकरे खाए, like ना interview करो, यहाँ पे करो, वहाँ पे करो. And then I got settled in one company which I worked as a tool and die maker. Okay. And it was a plastic molding company, and where I learned a lot about tool and die making. So hands-on training in tool and die making. And next year after that, maybe I think after 3 years of completing my NCVT, I got into the factory where my father was working, and it was more same of panel factory. building. Sorry, आपने अपना आप कब परमानेंट हुए थे? Which year? 99. 99. Yeah, but I was working as a temporary from the year 96, actually from 94, but the joining date which was given to me was 96. So from 96 to 2021, Yeah. आपको कितना difference दिखता है working culture में? See, now we need to know the status everywhere. Okay, first of all, jobs are not available. It is not like कि ना कल आप उठ के गए और नहीं मुझे यहाँ नहीं काम करना. I don't want to work here. I want to go there. Earlier, that thing was possible because they were looking at skilled people. They were looking at experienced people. They were looking for specialized people. But now there is no thing as specialization because everyone is doing everything. Now, if I tell you, are you a specialist in maybe data analyzing? You may be data analyzing and you may be doing something else also, which you are proficient in. Now, you got 2, 3 skills now. And now what happens, since you are right about that thing also where automation came in. Yes, absolutely. That is the core reason where the manpower was, because people could not adjust to the new change. Change is always going to be there, and we all need to upgrade to that level. We need to change. They say na, change is the only constant. Constant. So change तो आता रहेगा. तो आप अगर बदल नहीं सके, then you're out of the game. So we need to adapt, and those people who have adapted, those people who have changed, are the only people who are surviving. Those who could not change, I mean, as you're talking about the BRS, there were some people who were willing to change over. Na, ki, हाँ sir, I'm ready to do this job.
I'm ready to do this. So those people are still there. For instance, I would like to continue with my journey, which I think will answer your question also. uh, I was basically a worker over there, and there's this person, I don't want to take the name, but that person made me realize that education is more important to get you on top. Now Right. I will have a job ना मेरा, लेकिन मेरे को अगर grow करना है, if I have to grow, then the only thing which can take me on top is my skills, and that would be education. And I was very good at drawing. मेरा जो engineering drawing का जो concept था ना was very clear, and I mean now also I'm very good. So that person suggested to me that I do a diploma in drawing and design, draftsman. And I did that. Of course, it was a correspondence course, but I could clear it because my concept was very clear: engineering drawing, machine drawing. And after doing that, I got an opportunity to come into the technical field, the design team, which I thoroughly enjoyed. ना कि हाँ अभी ये मुझे this is what I want to do. ना वो Great. nut bolt tight करने का वो ठीक है, वो that was okay. But this is what I wanted to do. ना developing, designing new concept, new prototype, and that is where I made a change in myself, as what you are talking about. Hmm. If I would not have taken that decision, then perhaps I would have been one case of VRS, maybe outside. So then I came to know कि अभी every time they say ना, you need to grind the axe, every time you need to polish, you need to sharpen your pencil to make that drawing. Great. So that is one thing which I took कि अभी नहीं, अभी तो अगर कुछ करना है तो we need to upgrade our skills. And first we had 2D AutoCAD which was there, and later on we were introduced to 3D modeling software, in which मैं तो घुस गया उसमें because I really enjoyed doing that. And that is how I got into design. And uh, I think that will answer your question also, because now what these engineers are doing is they're coming with their engineering background, but now they're also learning the skills of 3D modeling. I mean, of course, I'm sure in the engineering they must be teaching you, but here it is hands-on experience, and now it's a total different thing. And now they are in the field कि मालूम है कि अगर ये नहीं मिला तो शायद बाहर कुछ नहीं मिलेगा. So waiting over here, taking the experience, and then going out is probably the better option, rather than just taking a begging bowl and going around. So Great. now I see most of the engineers who come. First the engineers ना वो long term loyalty base पे रहते थे ना, एक 10 साल निकाल दिया, 15 साल. But now I see engineers who are coming here, taking that experience for 3 years, and then making a jump to another field, or to uh, another company, another department. There are a lot of engineers. Earlier there were engineers who एक ही department, logistic, तो logistic में 25 साल निकाल दिया. Hmm. तो ऐसा नहीं है. अभी वो logistic का भी मजा लेते हैं, production का भी मजा लेते हैं, design का भी मजा लेते हैं. Now they are learning everything because they don't know what tomorrow what might come, and उन लोग का प्लेट में और क्या क्या परोसा जाएगा ना. तो your thali needs to be decorated with all these items. Chappan Bhog. Chappan bhog. Great. So, Jason, as Yeah. you said that change is the only constant here, Absolutely. right? And what personally you changed is that you transitioned from one part of your job to another part, and that means that you might have to learn some things, you might have to uh, put an extra effort in that. And how did you do that extra effort while working in that job from the whole day? You said you did a correspondence course, and because there are many people right now who are just afraid of doing that extra effort to grow up in life and to move ahead in life. So what is actually required from a person? I'm not saying that how they should manage time, just from inside, what is required for a person from inside? Risk taking. Very important that you take risk in life. Because until you don't jump into the water, you will not know how deep it is, or whether you know to swim. तो आपको अगर स्विमिंग करना हो तो पानी में कूदना ही चाहिए.
See, if I would not have taken that decision of doing that course, I would not have got that opportunity. Mhm. So I'm not saying take a risk without thinking about it. You Proper need planning. to proper Yeah, planning. Absolutely. Thank you very much. yeah. So you need to judge कि मेरा capacity क्या है. First and foremost, you understand your capacity. ये मैं कर सकूंगा. Can I do this? What it is going to take? Of course, finances are another issue. Let's keep that aside. Yes. But am I inclined to it? ये मेरा aptitude में है क्या? Because most of the time I find people jumping into things and then coming out of it because वो कभी था ही नहीं उनका passion. Yes. So first and foremost you need to find out कि क्या चीज ऐसा है जो जल रहा है अंदर ना. वो जो पैशन का जो फायर है वो जलना चाहिए अंदर ना. नींद नहीं आना चाहिए. You should not be sleeping. I'm not talking about stress related na loss of sleep. Yes, yes. But ना your dreams, your aspirations, you नींद नहीं आना चाहिए आपको. You should not be sleeping. Yes. So those are the things will make you take that jump. It's basically called leap of faith. Na to you have to take that leap of faith. Otherwise you will not be able to change yourself. I totally agree with you because जो आपने बोला ना कि अंदर से एक जलन होना चाहिए, which some people call it as sort of passion or something which makes you not sleep. And I think personally, I know I'm very very young right now, but जब मुझे ऐसा कुछ चीज मिलता है पर्सनली कि फॉर एग्जांपल मैं इस पॉडकास्ट को ही ले लेता हूँ. ये पॉडकास्ट हम लोग ने ऐसे टेम्पररी बेसिस पे थिंक करके स्टार्ट कर दिया क्योंकि अंदर से था कि हाँ, लेकिन एक बार स्टार्ट करने के बाद जो पैशन आया ना कि अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके लिए हमको कितना पढ़ाई करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग को कितना रिसर्च, कितने कोल्ड कॉल्स करने पड़ते हैं कि हम लोगों को गेस्ट को बुलाना है. और आई मीन और इसके बाद भी हम लोग फिर भी मोटिवेटेड रहते हैं, वेट करते संडे का कि आज हम लोग कुछ करेंगे. आई टोटली अग्री विथ यू. एंड एज यू सेड रिस्क टेकिंग, I don't think it is risk taking in that manner which people think that they are taking risk. It is like you still have to do this. You are taking risk on your time right now. अगर हम अपने टाइम पे रिस्क लेना शुरू कर दे तो आई थिंक बहुत लोग अपने पैशन के पीछे भाग सकते हैं. But I और think it's very important to identify कि अल्टीमेटली आप लाइफ में क्या चाहते हो और आप हमेशा किसी ना किसी एक ट्रैक में रहते हो और कुछ ना कुछ करते रहते हो. एंड अब आपको वो पर्टिकुलर पैशन फॉलो करना है और क्या आपकी फाइनेंशियल या पर्सनल रिलेटेड थिंग्स आपको अलाउ कर रही है उस पर्टिकुलर पैशन या ड्रीम को फॉलो करने के लिए. आई थिंक दैट इज द रिस्क टेकिंग फैक्टर कि आई एम ऑलरेडी ऑन सम पाथ कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है और सडनली मैं चेंज करता हूँ कि नहीं मेरा ड्रीम ये है, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, तो क्या मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में भी अपना करियर बना सकता हूँ. Correct. आई थिंक दैट अभी बात पैशन की हो ही रही तो आपका पैशन की बात की जाए बिकॉज यू नो हाउ पैशनेट you are about that thing. So I think Naveen, you should take over. It is your passion too. See, उसके पहले मैं इवन जैसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब आपने बताया ना कि आपने सेम फैक्ट्री में जो आपके फादर जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहां पे ज्वाइन किया, तो मैं इसको अपने से कैसे कनेक्ट कर पाया कि मेरे फादर एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में असेंबली लाइन में जॉब करते थे. एंड ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग मैंने उनसे जाके सीखा. उन्होंने मुझे ना लंच टाइम पे ट्रक के पार्ट्स के बारे में बताया. एंड मुझे वो पर्टिकुलर लर्निंग जो मेरे को फादर से मेरी इंजीनियरिंग के टाइम में मिली, वो कैसे कनेक्ट हुई कि मुझे अपनी फर्स्ट कंपनी भी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग वाली ही मिली. सो जब भी बात आती थी कि ना किसी से मैं बात करता था तो मैं बोलता था कि फादर में जो ट्रकिंग का खून बहता है सेम खून मेरे में भी आया है. तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी. And Jason, it's very good to know that you are multi-talented and you are doing, बहुत सारी चीज में, बहुत सारी फील्ड में आप ने ट्राई किया है, उस पे आप सक्सेसफुल भी रहे हैं. एंड मेरा पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट था वो म्यूजिक साइड बहुत ज्यादा है. सो जैसे ही मुझे आपके बारे में पता चला एंड मैं सबसे ज्यादा उस पर फोकस किया कि आप म्यूजिक
पे मतलब म्यूजिक में आप क्या क्या कर रहे हैं और आपको क्या क्या चीजें, मतलब कौन कौन से सॉन्ग्स, कौन कौन से म्यूजिक टाइप आपको गाना या आपके बैंड के थ्रू आप लोग को परफॉर्मेंस करना अच्छा लगता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जिसन कि ये म्यूजिक वाला जो कीड़ा था ये कब आपकी लाइफ में अल्टीमेटली आया? जुनून। जुनून यस। जुनून ओके, ये भी दिस इज अ वेरी फनी थिंग बेसिकली। ये कुछ जुनून वुनून नहीं था, देयर वाज नो जुनून। ये मेरे पिताजी ने मेरे पिछवाड़े पे लात मार के मेरे को गिटार क्लासेस के लिए भेजा था। ओह Hmm. ग्रेट। So it was funny that my father wanted me to learn some instrument, which I was not interested. I was not interested. मतलब ये क्या है यार, ये फादर लोग को या पिताजी लोग को दूसरा कुछ काम ही नहीं है, ये बच्चे लोग को ये लगा दो। अभी अभी नाउ राइट नाउ यू कैन सी ना, बच्चे लोग कराटे क्लास जाते हैं और क्रिकेट क्लास जाते हैं, एंड आई फील सो सैड फॉर दीज स्टूडेंट्स यार, कि छोटे छोटे बच्चे रे वो इतने बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं। So fortunately or unfortunately, I don't know, but my father, after I finished my 10th, no, I was doing my college in 11th standard, and he said, "अभी ये बैठा है, ये बहुत lazy लड़का है, इसको कुछ करना चाहिए." He wanted me to learn the violin, and apparently to learn the violin, it takes around 4 years. तो मेरा पिताजी को उतना पेशेंस नहीं था, ये 4 साल। तो उधर वो जो हमारे नजदीक थे, उनके पास एक बूढ़े अंकल थे, और एक्चुअली मुझे लगता था वायलिन ना सब बूढ़े अंकल ही बजाते थे। अरे सर मैं सब मत बोलो, मैंने चालू किया है सीखना। इट वाज दैट टाइम ना, क्योंकि हम लोग वी यूज्ड टू सी ऑल एल्डरली, सब Yes. बूढ़े लोग आते थे वायलिन बजाते के। तो ना मैं बोला अरे ये क्या है यार, ये जबरदस्ती कर रहा है पिताजी। एंड देन ही टुक मी टू वन क्लासेस एंड ही सेड नाउ यू नीड टू लर्न गिटार्स हियर। एंड वो गिटार वगैरह खरीद के दिया, और मैं वो रोज टंग 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 कुछ ना हाँ, कुछ। आई थिंक सर आपके फादर टाइम से आगे थे, उनको पता था कि कॉलेज में जाके लड़के नहीं नहीं कैसे कैसे हीरो दिखते हैं गिटार के साथ, वायलिन। No, I don't agree with that. My father's intention was to keep me occupied. है ना, कि ये दूसरा कुछ नहीं करे, कि ये ठीक है घर पे बैठ के ना गिटार बजाओ या ना, कीप हिम ऑक्यूपाइड, उसको दूसरा कुछ ये नहीं। मे बी आई थिंक दैट वाज, he loved lot of music, and we had at that time I remember we had lot of Boney M ना playing in the house, and since he was a electrician, वो उसने खुद का वो स्पीकर बनाओ, एम्पलीफायर बनाओ, ये वो खुद ने उसने बना के सब बड़ा बड़ा बॉक्सेस घर पे रखे थे, तो दिन भर वो गाना ही बजता था। एंड मैक्सिमम वी यूज्ड टू प्ले ऑल डिस्को, इंग्लिश डिस्को। So after I started playing the guitar, I mean, I thought I could play the guitar, मैं कुछ लेके बजा रहा था। I got an opportunity to go for a rock show, Okay. and Okay. I had never been, no, I had never been for a show as such. और मेरे दोस्त ने वो टिकट वगैरह निकाला था। I don't know if you heard this band called Rock Machine. So in the 80s, it was a huge band, and मुझे नहीं पता था Rock Machine क्या ना band है। And I went for the show. It was in Rang Bhavan, and it was jam packed. Luckily we had tickets, and it was raining, और मैं छाता लेके बैठा था, और किसी ने वो पीछे से डंडा मारा। And then I came to know कि रॉक शो में छाता लेके जाके कुछ फायदा नहीं है। No, and वो छाता बंद करके मैं बैठा, and मैं बोला यार। And then when I saw that band on stage और उन लोग का जो performance देखा, especially the bass guitarist, and I clearly remember, no, he came with his guitar, and वो झूम रहा था, no, the entire, I got mesmerized over there कि अरे यार ये what is this, like ना ये क्या हो रहा है। And just imagine you're like ना just 10 feet away from a live act. Nowadays we get to see on YouTube and all that, but वो जो live देखने का जो feeling है ना, that is, you cannot no, there's no words to express. And I saw this guy with this bass guitar, and he's moving, or my eyes were fixed on him. I don't remember what songs they played, वो क्या किया पता नहीं। बट आफ्टर दैट ना, पता है बच्चे लोग को जब भी वो छोटे बच्चे लोग को टॉयज के दुकान में लेके जाते हो ना, तो दे कैन मेस्मराइज, दे उनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए ना, फिर वो भी रख देते हैं, फिर वो कुछ टेडी बेयर निकाल के ले। So I was like that, a person who was like a small child who's gone in a toy store,
and then I said, this is what I want to do. हाँ, ये जो चीज है ना, कभी कभी हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम लोग ने ऑर्डर किया डिश, लेकिन बाजू वाले का डिश देख के बोलते हैं कि अरे नहीं यार ये चाहिए. Right. That is what I said. फिर then I started following that band, and unfortunately that time there was no internet. ना जो भी उनका फोटोज और राइट अप्स आते थे, there used to be a book, रॉक स्ट्रीट जर्नल बोल के एक बुक आता था, तो उसमें उनके फोटो ना राइट अप, देन हु इज दैट पर्सन, उन लोग के सब नाम, तो वो कटिंग वगैरह करके रख देते थे. एंड आई केम टू नो दैट ही इज प्लेइंग अ बेस गिटार. देन आई सेड ओके बेस गिटार. फिर पता चला कि बेस गिटार में 4 स्ट्रिंग्स होते हैं, द नॉर्मल गिटार है 6 स्ट्रिंग्स. एंड देन आई एक्सप्रेस्ड माय डिजायर टू माय फादर कि ना आई वांट टू बाय दिस गिटार. मेरे पिताजी को क्या हुआ पता नहीं. देयर वाज एक्चुअली वेरी फ्यू स्टोर्स इन द ना मुंबई में, देयर वर बहुत कम इंस्ट्रूमेंट Music stores. instrument. हाँ, music instrument stores. Right now you have Amazon, you have Futados where Right. you can buy online. But at that time there was nothing, and there were no foreign goods. जो branded जो instruments थे वो नहीं थे, जो Indian made guitars we were getting. So there was this Bhargava's, एक तारदेव में एक mall हुआ करता था, I think Hirapanna mall. So there was a shop, and we went over there, and my father gifted me this bass guitar by an Indian made, Peter Pereira बोल के एक थाना में उनका एक ये होता है. And from then on I started my journey into the band. And like ना जैसे आप लोग हैं friends, तो मेरे friends भी मिले. So one fellow said, अरे you got a guitar, come let's start a band, I'm willing to sing. तो एक दूसरा लड़का बोला चलो मैं लीड गिटार बजाता हूँ. फिर और एक हम लोग ने ढूंढा एक ड्रम. वैसा करके हम लोग ने एक बैंड फॉर्म किया, एंड वी नेम्ड दैट बैंड स्क्रीम. So yeah, Scream. So talking about the choice of songs is, till my 11th standard I was only listening to Boney M. I thought Boney M is the only band in the world, दूसरा कोई band है ही नहीं. I had never heard of Beatles, I had never heard of ABBA, और ना दूसरा कोई भी band, Led Zeppelin, Def Leppard या Deep Purple या कोई band का नाम सुना नहीं था. But the moment we formed a band, ना ये सिंगर कोई गाना लेके आ रही, ये गाना करना है, ये कौन सा गाना है, डीप पर्पल, कौन डीप पर्पल, तो नहीं सुनो. एंड देन लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, लिसनिंग टू लेड ज़ेपलिन, डीप पर्पल एंड ऑल दीज सॉन्ग्स व्हिच वी वर सपोज्ड टू डू. एंड मैं बोला ये मुझे करना है. आई हैव टू प्ले दीज सॉन्ग्स. एंड देन फॉर्चुनेटली वी गॉट टुगेदर एंड वी स्टार्टेड दिस बैंड. एक्चुअली जैसन ये जो बैंड वाला जो एक अगेन जो कीड़ा रहता है ना, आई थिंक ये अभिमन्यु, वरुण, हम लोग सबने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लाइव परफॉर्मेंसेस देखते हैं, एंड नो डाउट जो ड्रमर्स को देखते हैं, गिटारिस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक गिटार्स वगैरह जो प्ले करते हैं, बहुत पैशन क्रिएट करते हैं हम लोग में भी कि चलो कुछ अपना खुद का एक बैंड बनाया जाए. बट जैसा आप बता रहे हो कि ना आपको एक किसी मेंबर्स ने जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और मे बी सिंगिंग में वो उनका इंटरेस्ट था, और अल्टीमेटली आप लोगों ने एक एक ऐसे बैंड फॉर्म किया. सो ये जो जर्नी थी, आपने स्टार्टिंग फ्रॉम ना आपका फर्स्ट गिटार आपको मिला, उसके बाद आपने सीखा, उसके बाद आप लोग ने बैंड ज्वाइन किया. जब आप अल्टीमेटली पब्लिक के सामने आते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस हम लोगों ने भी काफी अटेंड किया है, एंड ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से आजकल कनेक्ट भी होते हैं. एट द सेम टाइम ना प्रिपरेशन भी बहुत डिफिकल्ट होती है पब्लिक के सामने परफॉर्म करने के लिए. सो जब आप लाइव परफॉर्मेंस करते रहते हैं तो आपके माइंड में क्या चलता रहता है, और इवन मैं आपका फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस जो था उसका एक्सपीरियंस भी जानना चाहता हूँ. इट इज वेरी स्कैरी थिंग, क्योंकि परफॉर्मेंस जब भी हम लोग करते हैं, सी वी आर नॉट द ओनली वन हु इज प्लेइंग ना, वी नीड टू सिंक्रोनाइज. एग्जैक्टली, एवरीवन हैज टू सिंक्रोनाइज. और क्या रहता है, मैं क्या बजा रहा हूँ उससे ज्यादा ना मेरा पार्टनर क्या बजा रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है. सो इनिशियली व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज वी वर मोर नर्वस परफॉर्मिंग टुगेदर, बिकॉज रिहर्सल्स में ठीक है वो गाली गलौच होते थे, है ना, वी आर फाइटिंग बिकॉज कुछ किसी ने गलत बजाया, एंड वी टू स्टॉप.
but live performance you cannot do all the nonsense ना, you need to put up a different face. Right. एक performer का face डालना है. Performing is not only see, live performance is not only audio, it is video also ना. So we need to behave as a musician. I just can't stand in one corner and look stupid ना. फिर बोलेगा ये क्या हो रहा है. A performance of a band is a choreography. No, it is an audio visual show for the people. So all this has to go in mind. Now just imagine मैं उधर खड़ा हूँ और कोई किसी ने गलत बजाया और मैं उधर खड़े रह के उसको गाली दे रहा हूँ, तो ऑडियंस में से कैसे दिखेगा. Like, I mean, so initially it was very difficult because we were very nervous about each other's performance, because I knew कि अरे ड्रमर यहाँ ये लाइन पे आके ना उसका गड़बड़ हो जाता है, मे बी टेकिंग अ रोल डिक 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 कर रहा है और लेकिन वो कुछ दूसरा बजाने के लिए वो भूल गया. तो मेरा ना फोकस यूज्ड टू बी अरे ये करेगा नहीं करेगा, और उससे क्या होता था मेरे गलती ज्यादा होती थी ना. आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज मिस्टेक्स and I'm committing mistake. So that came by learning, na, by working and by confidence, by trust, by learning your parts, na, कि मेरा parts पे मैं अच्छा हूँ क्या नहीं, because I know he is going to do his work, everyone is going to do, ना एक confidence level आ गया. So in the band I learned a lot of things. First of all, the biggest thing was teamwork. Secondly was egos. ना, we had to leave all our egos. हम लोग बोलते थे कि रिहर्सल के टाइम पे हम लोग जैसे चप्पल और जूते बाहर छोड़ के आते हैं ना, वैसे हम लोग का ईगो अपना अपना छोड़ के आ जाओ, क्योंकि उधर सब बहुत बड़ा झगड़ा होता था. सबसे पहले कौन सा गाना लेने का ना, दैट वाज द चॉइस कि व्हिच सॉन्ग यू आर गोइंग टू प्ले, क्योंकि हर एक का अलग अलग फेवरेट गाना होता था. अलग फेवरेट ना आई वांट टू प्ले डीप पर्पल, वो बोलता नहीं यार वो गाने में कुछ दम ही नहीं ना, ये हम लोग ये गाना करते. फिर वो वोकल्स बोलता था अरे ये तो जमेगा नहीं, मेरा वोकल कॉर्ड क्या मुझे मार दोगे क्या ना, यू आर गोइंग टू किल मी, आई कांट टेक सच अ हाई नोट. So we had to like na keep then no, I want to be in front. Vocalist बोलता नहीं मैं आगे खड़ा रहूंगा, तुम लोग गिटारिस्ट पीछे हो जाओ. तो बोला क्यों भाई, I mean the stage is all ours. फिर ड्रमर बोलता मैं पीछे क्यों, मैं आगे आता हूँ. Right. I should sit behind. So all these things na, there's a lot of egos which happen, and most of the bands which break up is because of this non-trusting and getting the egos. So very important factor that I learned being in the band was teamwork. Now we need to coordinate, we needed to trust each other, we needed to leave all our egos behind and work as now one unit. That is which the band brought out these qualities in me. So yes, of course, your question, first couple of shows were hell because और sound के ऊपर भी ध्यान देना है. And then we knew what we were missing, and then each show was a learning ना कि हाँ अभी ये इसमें ये correct करना है, we need to correct this, we need to correct this. And later on it came a point where I could confidently play without any issues looking back or making mistakes. I think हम लोग ने भी अपनी कॉलेज जर्नी और अभी हम लोग अपने 30s में हैं, तो कुछ मूवीज लाइक रॉक ऑन और क्वीन एल्बम जो क्वीन बैंड की भी जो जर्नी है, तो ये थोड़ी बहुत जो लड़ाइयाँ होती हैं बैंड्स में आई थिंक होती रहती हैं. सो जेसन, ये तो रहा कि जब आप ना गिटार आप प्ले कर रहे हैं, एंड जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि you are singing in few live shows as well. So vocal तक कैसे shifting हुई, means when you realize that okay मेरे में एक singing वाला part भी है. That was a very interesting story. I started my band Scream from I think 92 before joining around the time I was in training center. So by that time we were doing rock music, और बाद में पता चला कि rock music में ना पैसा नहीं है, there is no money ना. हम लोग को कॉलेज फेस्टिवल्स में बुलाते थे और ट्रांसपोर्ट के पैसे देते थे, खाने के पैसे देते थे, वो तब तक ठीक था. लेकिन एज अ म्यूजिशियन वी नीड टू गेट मोर पेड ऑल्सो ना. हम लोग इंस्ट्रूमेंट ला रहे, वी हैव आवर ओन गियर एंड हम लोग प्रैक्टिस में इतना ध्यान दे रहे हैं. सो दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड ना वील गो इनटू मोर कमर्शियल. तो वेडिंग्स ना, जो क्रिश्चियन वेडिंग्स, देयर वर लॉट ऑफ बैंड्स एट दैट टाइम वो डूइंग क्रिश्चियन वेडिंग्स, एंड वी डिसाइडेड कि ना हम लोग वेडिंग्स में जाते थे. At that point of time, there were many instances where
जो जूने बैंड मेंबर्स थे ना वो लोग निकल गए. समवन हैड टू गो फॉर अ जॉब, समवन डिसकंटिन्यूड कि ये आप लोग अभी कमर्शियल म्यूजिक कर रहे हैं यार, आई वांट टू डू रॉक म्यूजिक. तो हम लोग बोल रहे हैं उनको, अरे भाई इसमें पैसा है. तो बोला नहीं मुझे रॉक म्यूजिक करना है, तो आई एम नॉट विथ यू. सो वी सेड नहीं यार, हम लोग को पैसा भी कमाना है, म्यूजिक भी करना है. सो दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डू. And we got into the more disco and pop music, and suddenly you find now everyone wants Hindi ना, पंजाबी डांस म्यूजिक करना है, तो वो भी बैंड को ही मैनेज करना है. Right. So from the year 2000 I had a new setup of band with new members, and there was one vocalist, one very good, Roland Pereira by the name, and he was awesome. जो उसका जो performance जो था, उसके वजह से my band came up quite top. We were at that point of time the number one band in the Mumbai, the Oh, great. हाँ, the scene जो चालू था, which went out for around 7 to 8 years. Nice. And Oh. around that time, Roland was getting opportunities to sing for a bigger band. तो मेरे पास आया, बोला कि Jason, so and so thing is there, क्या करूँ? I said नहीं, you look for your benefit. What is your, how long do you think you can sustain in Perfect Harmony? Secondly, for me, my job was very important, because Perfect Harmony, I was not looking at Right. a main income source. क्योंकि what was happening is these things are very seasonal. Yes. ना बैंड्स शादी के टाइम पे ही हम लोग को ना ऑफर होते थे. मॉनसून नो वेडिंग, सो वो पूरा मॉनसून का सीजन अप टू अक्टूबर वाज वी आर सिटिंग एट होम. ऑफ कोर्स आई वाज स्टिल इन अ जॉब, बट माय अदर म्यूजिशियंस दे वर जस्ट सिटिंग एट होम. नो मनी, फना फनी, कुछ भी नहीं हो रहा है. और फिर वापस दिसंबर में शोज आ रहे, जनवरी फरवरी में शो आ रहा है, फिर वापस देन वन वेरी लीन पीरियड टिल मे. So it was very, what do you say, dicey situation. Mhm. And he was getting a chance to perform for a very big band, though that band was doing shows outstation, means out of Mumbai. तो उन लोग का वो फाल्गुनी पाठक के जैसे है ना, दे आर डूइंग, हम लोग का नवरात्रि ही नहीं, बट लेकिन यूएस में जाके वो लोग दूसरे सीजन में भी वो लोग शोज करते हैं. So he Okay. was getting a chance somewhere there, and he was going to earn a lot of money, and I didn't stop him. So once when he went there was a big void कि अरे अभी singing कौन करेगा? And then I got a couple of singers who were like ना, मैं बोला अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, like it is ना, वो पूरा जो बैंड का जो ग्राफ था ना, जो ऊपर गया तो पूरा नीचे आ गया. Means clients who had seen the band earlier, Mhm. they were like अरे ये क्या हो गया यार? I mean, now I started losing shows, I started losing a lot of people, a lot of contacts. And these things, see, band and all this, na, ये पूरा, it is contact based. It is not how you perform. आपका performance पे ना, आपका context पे, because most of the Right. shows are got from the event managers ना, who are managing. अभी जो शादी का program करते हैं, so they are managing everything, right from the decoration to the caterer to the compare. वो पूरा वो package deal में दे देते हैं, पूरा band वैंड सब. So that is when that void was there, and that is when my colleagues were there. They said, "Why don't you start singing?" I know I don't look very good. I had already put on a lot of weight, and मैं बोला यार, तो बोला नहीं, at least आप कुछ तो ठीक करोगे ना, you will at least do something better than what we are getting. So I recruited someone to do my duties where I was playing a bass guitar. So I had to recruit someone, and I took up that job as Singing. singing. So it was actually not planned. It was an unplanned activity which I did. जैसे आजकल जो इंडिया के कुछ अच्छे बैंड्स भी हैं जो कि आगे आ रहे हैं, और अगर मैं कुछ का नाम लूँ तो एंथ्रेसाइट या द लोकल ट्रेन एंड यूफोरिया, जो कि मैंने उनके लाइव परफॉर्मेंसेस भी अटेंड किए हुए हैं. सो आजकल के जो बैंड्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, एंड उनको परफॉर्मेंस के लिए स्टेजेस भी अब बहुत ज्यादा मिलने स्टार्ट हो गए. सो आप किस वे में उनके परफॉर्मेंस, अगर आपने अभी रिसेंटली अगर कुछ परफॉर्मेंसेस अटेंड किए हैं बिफोर कोविड, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो उनको कुछ चेंज करना चाहिए, या फिर आजकल का म्यूजिक और
जब आपने इनिशिएट किया था इसको 90s में, उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, और आजकल की जो ऑडियंस भी है वो क्या डिमांड कर रही है, और अलग अलग जो टाइप है ना, जो एक रॉक म्यूजिक रहेगा, एंड कुछ फेमस बैंड्स लाइक कोल्ड प्ले, लिंकिन पार्क, तो इनके तरफ भी यूथ का जो बहुत झुकाव। ज्यादा यूथ भी उसको सुन रहा है। तो उसको लेके आपका क्या कमेंट है कि जो आप अब आजकल डिफरेंट बैंड्स हैं, जो म्यूजिक आ रही है, जो सॉन्ग्स आ रहे हैं, व्हाट इज योर व्यू? This is a very nice question, and the answer is not very good. I'll tell you. ओके। Our entire, I'm talking about the Indian mentality. Okay, we have excellent musicians, we have got excellent singers, but the huge influence which is there is Bollywood. तो बॉलीवुड के ऊपर कोई नहीं जा सकता ना, इवन इफ देयर आर लाइक फॉर इंस्टेंस कैलाश खेर. ओके, कैलाश खेर व्हेन ही केम आउट ही वाज एन एक्सीलेंट, आई मीन ना, द वे ही पोर्ट्रेड हिमसेल्फ, द वे उसने किया, बट एट द एंड व्हाट हैपेंड फाइनली, बॉलीवुड ने उसको खा लिया. राइट। Even if you see the whoever big musicians or whatever, finally now Bollywood takes them in and they make it totally commercial. So there are very few artists who are very independent, or because of Bollywood there is no growth for them, because if you go to any parties you will not find one single music being ना एक कोई इंडिपेंडेंट यूफोरिया का गाना आपको शादी में नहीं मिलेगा. Huh? At एग्जैक्टली। one point, Diler Mendi were doing very well. But then what राइट। happened? Bollywood started doing the similar Bhangra songs. Na? उन लोग ने at one point, if you see, आधा Bollywood were totally Punjab oriented movies शुरू करने लगे. Even that language was Punjabi. मराठी लड़के वो पंजाबी गाने पे डांस कर रहे हैं. Now suddenly if you see Sairat का जो गाना है, now if you see even outdoor अपना out of India people are dancing to Sairat song. So audience जो हम, I feel, this is of course this is totally my view, here in India ना we are not bothered कि कौन artist है क्या है. We are अभी बाहर गाँव का इसमें क्या होता है ना, there is no such thing as film music. Coldplay is Coldplay. Or जो भी other bands which are there, they've got their own identity. The films, they take their music and they give them copyright. ना कि I'm using a Coldplay song, I'm using a CCR song, I'm राइट। using Eminem, और उन लोग को रॉयल्टी उनको जाते हैं जो ये. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यू गेट बाउंड विथ टी सीरीज और मे बी आई डोंट नो भूषण कुमार का जो भी है उसके अंदर आ जाते हो. एंड देयर आर वेरी फ्यू सिंगर्स, इवन राइट। सोनू राइट। आई निगम. रिमेम्बर जैसन कि हम लोग जब स्कूल कॉलेजेस में थे तो बहुत सारे प्राइवेट एल्बम्स आते थे, जिसमें सिंगर्स, आई रिमेम्बर सोनू निगम का दीवाना एल्बम आया हुआ था, और उसके बाद अभिजीत. कुछ गजल एल्बम भी आ जाते. यस, अभिजीत के विजय. कुछ बहुत अच्छे एल्बम आते थे. एंड नाउ वी आर नॉट सीइंग सच एल्बम्स, प्राइवेट एल्बम्स. कुछ सिंगल सॉन्ग्स आते हैं, एंड कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि वो सिंगल सॉन्ग्स को प्रमोट करते हैं, बट वो बहुत लिमिटेड हो गए. एंड लिमिटेड. यस, यू आर राइट कि एब्सोल्युटली. कुछ समय बाद वो पर्टिकुलर सॉन्ग किसी ना किसी मूवी में ही सुनने के लिए मिल जाता है. सी बॉलीवुड म्यूजिक ना इज पूरा हावी हो जाता है आफ्टर सम टाइम व्हेन, ठीक है, यू गो समवेयर फॉर अ फंक्शन और समथिंग, मे बी वो अच्छा लगेगा कि आपका एक आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का गाना, लेकिन बाद में जो द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर देयर ना, दे विल अल्टीमेटली टेल दैट डीजे कि नहीं वो क्या वो ट्रेन वाली गाड़ी या जो भी गाना वो गाना बजाओ, या Yes, ना yes. फलाना ये डिमका म्यूजिक ये पिक्चर का गाना लगाओ. So secondly, the DJ has got no choice here. He is being played to entertain his guests, ना. तो वो थोड़ी बोलेगा ना ना मैं यूफोरा बजाऊंगा, वो यूफोरा बजाएगा, वो क्लाइंट आके उसका कान के नीचे बजाएगा. तो ऐसा नहीं, he cannot do like that. Secondly, also I'd like to stress about bands. Why bands have gone down? I'll give you a small reason for that. At one point, क्या हुआ कि especially Mumbai, I don't know about the rest of the India, timings जो थे ना live music के, they had cut down. Earlier the timings were 11:30 in the night.
So any program, even our weddings used to go out till 11:30 with live music. Then the government brought down the norms to 10 o'clock. 10 बजे का timing कर दिया उधर. That is when bands went out of focus, because that is when DJ came in. DJ का गाना वो कोई भी गाना बजा सकता था. Band में limitation होती थी. At that time we were not doing Hindi songs. और हिंदी सॉन्ग बोले तो ये शाम मस्तानी, बस उतना तक ठीक है. वो जो डांस म्यूजिक का जो ना कोई कहे कहता है, वो बैंड का इतना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं होता था टू गेट दैट इफेक्ट. और डीजे का कैसा, विदाउट ब्रेक इज प्लेइंग फॉर 3 hours. बैंड का कैसा होता था, आधा घंटा बजाओ, आधा घंटा ब्रेक लो, फिर दारू पीने के लिए बैठो. तो ये सब चीज होती थी बैंड में. फिर वो बोला अरे ये काला कौवा बजाओ, काला कौवा नहीं बजते, चलो जाओ तुम जाओ. तो secondly, what happened, a cost of a band is massive. No, you require huge power. When I say power is wattage. Band के लिए, because the bass guitar has got very low frequency. The drum जो kick है, वो धप बजने के लिए वो power जो चाहिए. So you require at least 5,000 watts of power. But for a DJ, एक 200 watt के speaker पे भी वो पूरा crowd move कर सकता है. Right. The cost of that compared to the cost of the band is different. A band will cost you 50,000, लेकिन आपको DJ 5,000 में मिल जाएगा. So what would you prefer? If you are a host, तो आप तो खाना अच्छा रखेंगे आप बुफे में ना, बुफे में 10 टाइप का अलग अलग खाना, उधर पानी पूरी का स्टॉल ये वो, लेकिन बैंड 50,000 का नहीं रखेंगे. आप क्या डीजे को बुलाओ उधर और मेक हिम प्ले, काला कौवा से लेके कोल्ड प्ले बजाओ, और जो चाहिए आपको, हिप हॉप चाहिए हिप हॉप बजाओ, रैप चाहिए रैप बजाओ, भांगड़ा चाहिए भांगड़ा बजाओ. सो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ही इज गोइंग टू प्ले द लेटेस्ट स्टफ. So that is when bands could not what we are talking about, the change, no? Yes. It was not possible because there are a lot of musicians who turned to DJing. वो अपना म्यूजिक छोड़ के, वो गिटार विटार बेच के, वो डीजे कंसोल लाके. I think it's a sad part. It is very sad part, yes. So that is the scene right now. Yeah. जैसे इससे कि पहले हम लोग आपकी लाइफ जर्नी के अगले स्टेजेस पे फॉरवर्ड करें, मैं अपने लिए एक एडवाइस चाहता हूँ. जैसे मेरे पास पिछले 11 सालों से मेरे पास गिटार है. इट्स अकॉस्टिक यामाहा गिटार. और सडनली कभी कभी इंटरेस्ट जागता है और मैं उसको लेके बैठ जाता हूँ, कुछ ऑनलाइन सेशंस देखता हूँ, कुछ 1-2 हफ्ते उसको चलता रहता है मेरा, फिर उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ. तो आपने भी अपनी जॉब लाइफ के साथ ये गिटार एंड सिंगिंग इंटरेस्ट को मैनेज किया. मेरे लिए कुछ एडवाइस मैं चाहता हूँ अभी आपसे कि मैं कैसे मैनेज करूँ. नाइस क्वेश्चन. If you want to earn something from it, then you learn. If you are not going to earn anything from it, then आप जो कर रहे हो अभी वही करो ना. जब भी टाइम मिला ले लो करो. But if you want to earn, आपको लगता है, because that is what I felt ना, because at one point of time I was unsure of what is going to happen with the company. The company chalegi, so I wanted something else to go on, and that is why I was putting a lot of effort. And then I realized कि नहीं यार इसमें अभी चल नहीं रहा है, मेरा मैं नौकरी पकड़ो. So now also when people call me ना performance के लिए, मेरा एक question रहता है, what is the budget? Right. So if they are not going to pay me, I'm not going to perform. अभी कोई बोलता है अरे आ जाओ ना यार गिटार लेके आ जाओ. क्यों? Why should I? वो पिकनिक में गिटार लेके, पिकनिक में जब मैं गिटार लेके जाता हूँ ना, मेरे से ज्यादा दूसरे लोग ही बजाते रहते हैं टैंग टैंग टैंग, और 2-3 पैक के बाद वो गिटार का क्या हालत होता है. सो इट्स बेटर नॉट टू डू दिस नॉनसेंस. इफ यू वांट टू सीरियसली परस्यू इट, अगर आपको सच्ची में इच्छा है, बट यू डोंट वांट टू अर्न एनीथिंग, यू डू इट, गो अहेड. बट अगर आपको पूरा सीखना है, और इफ यू आर गोइंग टू अर्न मनी फ्रॉम इट, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. बट राइट नाउ इफ यू जस्ट वांट टू डू इट, आपका जॉब भी रखना है बट आपको टाइम पास करना है, देन डू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. That is the only advice I can give. मतलब कितना टैलेंट छुपा हुआ है, मतलब काउंट ही नहीं कर सकते हैं. मतलब कहाँ से स्टार्ट किया? गैराज में, मतलब टूल्स हैंडलिंग, इसके बाद फिटर,
डिजाइनिंग, फिर म्यूजिक के बारे में तो बात नहीं करूंगा मैं, इन लोग करेंगे, क्योंकि अगर मैं किया और मैं कुछ बोला तो आप सब चले जाओगे। राइट राइट, तो एब्सोल्युटली राइट। उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मतलब क्या, मतलब इतना सारा टैलेंट कैसे छुपा के रखा है, तो मतलब क्या बोले। अभी मैं देख रहा था आपके बारे में, आप टीचिंग पे भी आए, मतलब अभी कितना और क्या क्या बाकी है अभी देखेंगे आगे। बोल नहीं सकते। अभी तो सिर्फ सिर्फ हाफ सुपरमैन की सेंचुरी तरह, हुआ है, अभी तो सिर्फ हाफ सेंचुरी हुआ है और आधा सेंचुरी बाकी है। आखिर में सुपरमैन की तरह उड़ने वाले हैं अभी। बस यही आई थिंक बचा है वरुण, हम फाइनली। लोगों को भी इतना एम्बिशियस होना चाहिए, क्योंकि बस हम लोग, मेरा तो जैसा था कि जॉब ही चल रही है, एटलीस्ट हम लोगों ने कुछ एक न्यू थिंग स्टार्ट की है, एंड हम लोगों को जेसन से मिलने का मौका मिला हुआ है। गुड। यस अभिमन्यु। No, so I just would like to touch on one of your talent, that is teaching. I mean, after doing so many things in your life, and then you entered in a teaching. So, see, initially when you started, you were like students. So there must be a different mindset Correct. when you are working in an industry. I mean, that time, as you told, you have to reskill yourself. So you are learning by yourself. So, and when you come to the teaching part, it's not only about your technical knowledge or any particular subjects which you are going to teach, whether it is a music or engineering tools or anything. It also matters how you handle the students, because Correct. they all not be in the same mindset. Absolutely. So what are the challenges you face in that, and how do you handle? I will not say the challenges, how you develop that skill to handle those स्टूडेंट्स। Students. students. Yeah. Thank you Abhimanyu for coming on this topic. And इतना चढ़ाओ मत यार, ये ऐसा I think every individual is talented. Only thing we are not finding ourselves. हम लोग ना we are not seeing, हम लोग आत्मा क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोस्पेक्टिव ना, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट व्हाट वी कैन डू। नहीं तो हम लोग क्या खाना खाए, काम किया, सो गए। बट आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट अ टैलेंट, क्रिएटिविटी, या कुछ ना कुछ कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज वी डोंट एक्सप्लोर, आइदर वी आर टू लेजी फॉर इट, और ना हम लोग को टाइम नहीं ऐसा बता रहे। बट देयर इज नथिंग लाइक दैट. So I'll just briefly tell you how I got into this teaching thing. I always like to instruct and tell people ना, अगर किसी को कुछ problem है, so I used to be the first one to tell that person, अरे ऐसा करना है, वैसा करना है. During my term in the factory, I got a chance by one of my superiors. He gave me a chance to teach SAP, because at that time we were doing SAP entries also, data entry हम लोग करते थे. So there was this new unit which had come, and there were these around 10 people were there. So my boss came to me and said, अरे ये जो SAP का training है ना, बाहर बहुत expensive है. So can you just tell these new joinees, जो what work you are doing, can you tell them, जस्ट एक्सप्लेन एक्सप्लेन ना ना, लोगों को जरा 1-2 दिन का ट्रेनिंग देना है कि क्या क्या एंटर करना है, क्या नहीं करना है. सो आई वाज लाइक अरे अच्छा है. एंड आई वाज गुड एट मेकिंग पीपीटीज. तो मैं ना उसका पूरा पीपीटी बना के प्रोजेक्टर पे डाल के कॉन्फ्रेंस रूम में, व्हेन आई डिड दैट सेशन, माय बॉस वाज लाइक अरे यार तू तो एकदम प्रोफेशनल जैसा कर रहा है. एंड आई नेवर न्यू कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ. द ओनली थिंग दैट मेरा जो चाहत था ना कि आई वांट टू टेल समथिंग टू कुछ सिखाना है, दैट जस्ट केम आउट नेचुरली. ओके. एंड मेन थिंग इज आई ऑलवेज लाइक टू स्पीक in front of people, that I had practiced this. So public speaking, जो मेरा जो practice किया हुआ था, that came into play at that time. No, I was not scared, not nervous. I could easily deliver the lecture. And these people, after getting the training for 2 or 3 days, they were like, अरे बहुत अच्छा है. And that got me going. Later on, when we did a 3D modeling software,
there were trainers who came from outside, and I came to know they were charging around 25,000 per day, and I was like, "Arey, baap re." And there was this very nice gentleman. I don't want to take that person's name, and he gave me an opportunity to teach the young joinees 3D modeling software. Oh, great. So for me, it was like a piece of cake, because I'm not boasting about this, but I'm really very good in my 3D modeling software. That's really good. Yes. I'm very fast. I can concept मेरा बहुत clear है. I can imagine 3D in my mind. So Visualization. visualization. Super. Thank you very much. So I don't need to go in for a software. But then the thing is, what I'm thinking, what I'm doing, I could easily give this knowledge to the young engineers. So that was the second step. And then I came to know कि ये मैं कुछ कर सकता हूँ. And usually there are a lot of training sessions which happen in all the companies and all. And I attended one training, and there was this lady who was giving a training on advanced presentation skills, ना PPT. And मैं ना बोर हो गया वो लेक्चर में. बोला ये क्या हो रहा है यार, पूरा 8 घंटा ना you are sitting in front of that madam and you're yawning half the time आपको. And I said, अरे ये क्या ट्रेनर है? तो बोला नहीं यार, I can do better than that ना, like putting little laughter and humor and this and that. And I approached her and I said, madam, how do I become a trainer? And she said, इसको कुछ नहीं, you need to do a train the trainer course, which is available. There are a lot of institutes conducting this course. I searched online. Dale Carnegie का मुझे ट्रेनिंग का देखा मैं. उसका 3 दिन का ट्रेनिंग किया. I got a certificate, train the trainer. And after a couple of years, I came to know there was an opening in training center for engineering drawing teacher. So I applied over there. Fortunately, there was a very nice gentleman who was my mentor later on, and my manager, and he gave me that opportunity to come back to training center and teach. And that was a full circle for me, like starting as a student in training center, and now becoming the instructor or trainer in the Right. training center. And then, as you are saying, the difference now between then and now teaching में, that time we were students, और आपको मालूम है students तो इतना मस्तीखोर, और ना हम लोग कितना मजाक मस्ती करते थे हम लोग का टीचर का. और मैं ना हमेशा बोलता था कि बच्चे आप जिधर बैठे हो मैं उधर से ही आया हूँ. So I know all the tricks, and like I knew, but the difference what I found was कि तभी ना छड़ी बाजे छम छम बोले तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते. तो तभी वो सिस्टम था. आई एम टॉकिंग अबाउट 90s 80s ना, लेट 80s 90s, कि हम लोग को पनिशमेंट करना, नील डाउन करना ना, कुछ किया तो वो एक लंबी छड़ी रहती थी हमारे इंस्ट्रक्टर के हाथ में, तो 2 हमारे पिछवाड़े में मार के ना. तो but now I came to know we cannot touch students, no, and we have to be very careful with क्या बोलता है उसको ना, gloves, snowflake. So handle with gloves. क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो they don't have वो patience, या उतना एक तो माँ बाप का मार खाया हुआ नहीं है कभी आजकल के बच्चे लोग. Even for me, I have not touched my sons, but I remember मेरा घर पे कॉपर वायर तो रहता था, तो कुछ नहीं मिला तो पिताजी 2-3 कॉपर वायर के राउंड करके सटासट कॉपर वायर के मिलते थे. Fortunately, my children, I have spared them. घर पे कॉपर वायर तो नहीं है. और गिटार महंगा है. गिटार का स्ट्रिंग बहुत महंगा है. नो, आई थिंक वो थोड़ा चेंज भी आया है. पहले अगर टीचर्स मारते थे और घर पे बोलो कि आज बहुत मार पड़ी, तो नेक्स्ट डे पेरेंट्स जाके बोलते थे टीचर को इसको और मार और कूटना. करेक्ट. शायद वो अभी पेरेंट्स का माइंडसेट नहीं है. हाँ, नहीं, क्योंकि पेरेंट्स खुद हाथ नहीं लगाते ना. पेरेंट्स आके बताते कि आपने क्यों हाथ लगाया. So our now teaching is become more focused on learning based ज़्यादा हुआ, interactive. हम लोग के टाइम पे उतना फोकस नहीं रहता था. Interactive सिर्फ it was a monologue ना. वो सर बोलते थे
हम लोग सुनते थे, हम लोग सोते थे, और लिखते थे, कभी नहीं लिखते थे. But now it is not like that. Now it has to be very learning, interactive based. Now there are so many softwares which are available. Even use of mobile phones for that matter. हम लोग के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. वो एक फोलियो के ऊपर वो प्रोजेक्टर रहता था, और बस अभी एनिमेट करके हम लोग वी कैन शो वीडियोस विच आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग आवर टाइम. तो या तो फिर हम लोग को मशीन्स मैन्युअली देखना पड़ता था, लेथ मशीन. तो लेथ मशीन का फोटो देख के नहीं पता चलता था, लेथ मशीन प्रैक्टिकली जाके देखना. लेकिन अभी बच्चों लोग को लेथ मशीन बोलो या वेल्डिंग बोलो या whatever machine, CNC machine, we can actually show them. Simulations are available right now. So there's a lot big change in this. And also now the student the teacher relation is become more close. Earlier there used to be a big barrier कि नहीं हम teacher को approach नहीं कर सकते. Only the clever ones they were approachable. But right now, that barrier is not there. We have become more connected. We need to जो slow जा रहा है उसको भी लेना है साथ में. So all that changes are there. Now this is what I'm seeing. The teachers have become more proactive because suddenly there are so many questions coming. पहले हम लोग को गप्पा बसा बोलो चुप बैठो ना, वो बोला जाता था कि, लेकिन अभी चुप बैठने से नहीं चलेगा. Now it is ask questions, ना. So we need to empower the students. नहीं तो वो सीखेंगे नहीं. Till you don't ask questions, you will not learn. Now it's become opposite. Now there are a lot of questions which students ask, and for that we need to be ready. अगर मैं मेरा homework करके नहीं आऊँगा, so I will not be able to face the question. Now it is also that पहले कैसे था कि there was no learning from the teacher side, but right now we are learning from the students. Now the students are so updated now. Every day for them is something new. ना कोई app आया है, कोई mobile आया है. Now for me, like operating a mobile, a new device, जरा मेरा हाथ कांपने लगता है. Then my son will come, and now also for the setting and all, my son was standing here कि हाँ ये वीडियो में इधर जाओ उधर जाओ ना. हम लोग का जो फोकस है become little low. But now the children are more I mean जो डिवाइस के साथ वो लोग जो खेलते हैं दिन रात, उनका फोकस तो ज्यादा है. And now it is time for us, I think we need to open our minds as teachers and instructors and learn from the students. तो ये चीज भी होने लगा है, that we are also learning from the students. Good. No, actually, that's quite interesting also, as you are upskilling yourself with the technology. Because if I remember, I mean, I read about it because that time we were very young, where the drawing or sketches used to be made on the A4 sheets or A3 sheets with the hand, with all the pencils, all Drafter. the drafter, right? Yes. Even the big buildings used to. But now with the technology and the so many tools are available now, it's quite become interesting as well and easy to understand for the students, because for example you have to draw one cylinder, so you click on the cylinder option, you will get it. You just mention length, diameter. Animated and graphic videos or presentation, right? But earlier it was not like that, because there you have to visualize yourself. Okay, if you're seeing from here, how does it look? If you're seeing from the top, how does it? So does that somewhere on the personally the students who are coming, their visualization skills is how it is? I mean, you feel the difference, or somewhere this technology is suppressing their imagination skill also? Yeah. How do you find that? First and foremost, let me tell you, all those who are coming in our institute, उनका सब लोग का ability नहीं होता है. All are not inclined. Now what we are teaching there is fitter and electricians. You know, अगर उनका aptitude नहीं है, वो नहीं कर सकते. But they are there. अभी now same thing. If you see for your engineering also, you must be also knowing. Some of your friends could not do it. Now, अरे आपको कैसे समझ रहा है यार, मुझे नहीं समझ रहा है.
आपको नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आपका एप्टीट्यूड नहीं है. दैट इज वन थिंग. देयर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स, जब व्हेन वी मेक अ व्यूज ना, ये 3 व्यू है, टॉप व्यू है, बॉटम व्यू है, ये व्यू है, वो व्यू है. सर कैसा निकाला सर. तो ना फिर वो, Exactly. हाँ वो फिर हम लोग बता रहे हैं ये बताओ, फिर वो विजुअलाइज करो, ये करो. तो जब तक वो उनका 3D दिमाग में घूमेगा नहीं ना, वो नहीं होगा. मतलब Second, to answer your second question is the technology making them dependent? Yes, absolutely. Now I remember when we were working in the design team, ना, हम लोग को सिर्फ 2D था. We were working in 2D, so we are making panels in 2D, and we had to imagine the depth. Depth में क्या हो रहा है? Maybe that bus bar is going, वो कितना deep जा रहा है, वो दिख नहीं रहा है हम लोग को. तो उसके लिए उसका दूसरा व्यू ना, साइड व्यू से हम लोग को पता चलेगा कि ये कितना लंबाई है, ये कितना, वो फेज 1 कितना लंबा है, फेज 2 कितना लंबा है, वट एवर दैट. सो वी हैव टू प्रैक्टिकली थिंक अबाउट इट कि कितना लंबा होगा. एंड मे बी जाके शॉप फ्लोर में, 3D अपना शॉप फ्लोर में होता था, लुक एट दैट स्ट्रक्चर एंड ओके, हाँ अभी अरे ये इधर, अच्छा ये इधर होल है, ओ ये इधर ऐसा है, अच्छा चलो ये हम लोग कवर बना सकते हैं, या ये हम लोग इसको सपोर्ट बना सकते हैं, या वट एवर. But now since the 3D is available, the software is available on the workshop, it becomes difficult for any engineer to visualize the 3 views. yes. आप उसको 3 views visualize करने को बोले, बोलो छोड़ो ना सर, इधर 3D देखो ना, ना ये घूम रहा है, 3D घूम रहा है, मैं क्यों वो पेपर पे देखो. दो हम लोग का ड्राइंग पेपर पे बना है, दैट पेपर इज अवेलेबल इन दैट फाइल ओवर देयर. हाँ, असेंबली का पूरा डिटेल दिया हुआ है, ये मार्क पे ये करना है, ये डायमेंशन पे ये लगाना है, व्हाटएवर, इतना डिस्टेंस पे ये लगाना है, एवरीथिंग इज गिवन इन दैट ड्राइंग. बट नहीं, वो ड्राइंग नहीं देखेगा, वो सीधा जाएगा, वो मॉनिटर के सामने, ही विल स्टैंड ओवर देयर, he will rotate that drawing, he will rotate that file, whatever, and so somewhere down the line, as you're saying, and I'm answering your question, some this technology is suppressing, वो नहीं करना चाहते, समथिंग लाइक अ सिमुलेशन. वो अभी फ्लाइट सिमुलेटर करके डायरेक्टली वो प्लेन उड़ा नहीं सकता है. ही विल हैव टू सिट इन द कॉकपिट, ही विल हैव टू फ्लाई दैट, वो एक्सपीरियंस, वो कितना झटका आता है, वो सिमुलेशन में शायद नहीं आएगा उसको. So I just I don't know. I mean, if I keep asking how much, I mean, I think there is a like knowledge in ocean. So I don't know how much questions we ask and you will keep answering. Yes. So But I think ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो there are many advantages, there are many disadvantages. But I Yeah. think जो न्यू जनरेशन आ रही है, न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको विजुअली तो बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस है, बट कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में when we talk about mechanical related things especially. And I'd also like to add here, Naveen, that aptitude I feel is very important. जब भी आप, आई एम श्योर आपके टाइम पे भी वो करियर गाइडेंस यू ऑल मस्ट हैव डन थ्रू, और उसमें वो जो करेक्ट जो आपका जो बताते हैं ना, दे टेल यू दैट ओके ये साइंस फील्ड आपके लिए ठीक रहेगा, आपका लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छा है, सो मे बी कैलकुलेशन, बिकॉज सम ऑफ देम मैथ्स ना, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को नंबर्स, आई मेरे को, मैं तारे जमी पर हूँ नंबर्स में, मुझे नहीं समझ में आता है, मेरा फाइनेंस जितना, वो सैलरी देखा, हाँ बस वो कितना सेविंग, आई कैन अंडरस्टैंड. नंबर्स में मैं आई एम अ बिग फेलियर, मैथ्स में आई एम अ बिग फेलियर. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई विद द स्टूडेंट ऑन दैट सेल्फ एनालिसिस में, वेयर इज माई एप्टीट्यूड, एंड डू एज पर, बिकॉज दैट इज द थिंग विच इज गोइंग टू टेक यू फर्दर. अभी अगर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है और मेरे को कल वो सीए का लाइन में डाल देगा, तो मैं तो नुकसान ही करूंगा यार सबका, या खुद का भी नुकसान कर दूंगा और दूसरे का भी. सो वेर इज माई, मेरा एप्टीट्यूड कहाँ पे है? हाँ, विजुअलाइजेशन, आई कैन विजुअलाइज. सो नाउ दिस विजुअलाइजेशन क्रिएटिविटी वाइज आई एम यूजिंग इट एवरीवेयर ना. आई एम यूजिंग इट फॉर म्यूजिक, आई एम यूजिंग इट फॉर माई डिजाइन पर्पस, बिकॉज वेर आई नीड टू विजुअलाइज थिंग्स, ना, I can do that. So my aptitude is, I have identified कि मेरा aptitude ना ये visualization. That way I feel if everyone goes through that process, and when they are making their career selection, they find out exactly what is there, na,
इसके लिए द डिफरेंस बिटवीन आर एजुकेशन एंड जो बाहर के एजुकेशन में, वो पहले से ही वो बच्चे को डिसाइड हो जाता है कि इसको क्या पसंद है, क्या वो फुटबॉल खेलना चाहता है या आगे पढ़ाई करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, या हम लोग के इसमें वेरी लेट इन लाइफ वी अंडरस्टैंड व्हाट वी रियली वांट टू डू. मे बी आफ्टर फिनिशिंग इंजीनियरिंग बाद में मालूम पड़ता है अरे ये तो मेरा था ही नहीं लाइकिंग, मैं तो राइटर बनना चाहता हूँ. सो इट्स So लाइक can we say that nowadays students are forced by the environment यस. which they are currently seeing, and ultimately they are not searching that factor or that talent which is already available in that particular Yes, students, or yes, yes. the I passion agree. thing which we are talking about in the entire podcast. See, actually, I agree totally, Naveen. What you're saying is, right now, what is happening now? ये पैसा बनाने का जरिया हो गया. Okay. Okay. Now, for example, if your aptitude is on dancing, you love to dance, and आप में है वो talent है, लेकिन आपके माँ बाप क्या सोचेंगे? अरे क्या तू नाच नाच के पैसा कमाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. आगे शादी क्या करोगे? No, so our parents thinking वो peer pressure जो रहता है, that is there now. If I see now most of the MNCs, I'm sure you all will also agree, they all take the cream layer ना, जो ऊपर के जो layer जो 9 point का जो उनका base रहता है, Yeah. 9 I'm not sure whether the 8 वाले point को भी मिलता है क्या नौकरी. But what about the students who are getting 5 and 4 and 6 and 7? Where are they? वो क्या करेंगे? तो इंजीनियरिंग करके बाद में फिर वो क्या करता है? सेल्स का जॉब करता है. ही डूइंग डेटा एंट्री. ही इज नॉट डूइंग व्हाट ही इज. उसने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, इज ही डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग? आई डोंट थिंक सो. So we find these people poor things. I mean, I feel very sad for them. कि they are doing odd jobs. They are not doing what they were supposed to do. तो वो 5 क्यों लाया है? शायद वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं पैदा हुआ है. He's maybe wanting to do something else, but because of the parents' pressure, I don't know whether to blame the parents or to blame the student. But now if you see, there are a lot of avenues available, of course. लेकिन अब अगर आप जैसे मैं बोल रहा हूँ कि म्यूजिक में मैं बोला बॉलीवुड का इतना ये ना व्हाट यू से जो इम्पैक्ट है. थैंक यू. कि एज अ नॉर्मल म्यूजिशियन आई नो मैं नहीं कर पाऊंगा वो. I will not be able to manage. Abhi, there is the EMI which I am paying for my house, my children's education. You think on just by playing a guitar में इतना कुछ कमा के कर सकूंगा? Not possible. So somewhere now as a parent, now I am become a parent. So as a parent, I am also thinking, अरे मेरा लड़का का उनको बोला ठीक है. अभी my son he's finished his graduation and he's done mass media. मास मीडिया में उसने ग्रेजुएशन किया है and he is inclined towards photography. I said, yeah, good, he's doing something in photography. I told him, okay, what you're doing is doing good, but see that you get a job which will feed you, which will keep you. That's good. कल जब तक मैं हूँ तब तक हूँ, मैं संभालूंगा, no problem, तुम करो. But मैं नहीं हूँ, you need to be independent. So getting a steady income job is more important. Good. So before we go to the next hidden talent and we ask further questions about you, since recently we all are going through the pandemic, so I would ask the question regarding the pandemic only. So how did it affect your teaching basically, and if you are taking online classes, for example, now everything has become online. So, don't know, maybe in future we will be eating online only. So we are getting online delivery na food. yeah. So, even on students mindset as well, Yeah. whether they are comfortable with those online learnings or not, or they are just finding it very cool way of learning. And I was seeing कि मेरे एक रिलेटिव कि जब वो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो उसके बाजू में कॉन्स्टेंटली उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं. तो आई वाज हैप्पी टू सी दैट एटलीस्ट पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एंड उनको भी समझ में आ रहा है कि टीचर्स का क्या रोल होता है किसी स्टूडेंट्स की लर्निंग वाली जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, एंड पेरेंट्स उसको किस वे में सपोर्ट कर सकते हैं. अभिमन्यु.
Yeah, no, same question I was asking. Basically, when you're taking online classes suddenly, so there are challenges from a teacher point of view to uh, on a single window you have to see what and all every students are doing, Yeah. and it's quite much difficult for make them understand also. And other aspect from the students point of view, how it is affecting their social skills, because that is also very important. So if you can put some thought on this. Yeah. Very good question. Absolutely nice question, Abhimanyu. Thank you for asking. The thing is, now, of course, due to the pandemic, we are going online and we are teaching. Now, teaching in a normal school and teaching, we are in the more technical line. So Exactly. you must understand our course, which is there, is 70% practicals and 30% is theory. So they are Correct. more hands-on, no, electrician and fitter trade. Oh, look, the fitter has to have the file in his hand. He has to have the hacksaw in his hand. He has to have the screwdriver. Same way with the electrician. Now, since I am teaching two subjects, that is engineering drawing and employability skills. Employability skills is more of like personal development and digital literacy, English literacy. So making them job ready, making them employable. Mhm. I'm not finding this hard because our lectures are very monotonous right now. But I'm having a big problem because my lectures used to be very interactive. No, Exactly. what I do is usually we have a 2 hour session usually in the training center where 1 hour I am teaching them the whatever chapter, and for the second I engage them ना कुछ groups करके activities करो, so that usually what happens, there are out of 30 students there are 15 students non-participants रहते हैं ना, they've got a blank look and this is Mhm. normal, ऐसा कुछ ये नहीं है, maybe it's that वो teacher का गलती है या पता नहीं. So to engage those non-participants, what I usually do is make them into groups of 4 or 5 और कुछ उनको एक्टिविटी देना कि अच्छा ये आपको ये फाइंड आउट करना है, ये करना है, वो करना है. That is not happening now because now I cannot make them go in a group and get them. So interactivity has stopped. A major concern what we as teachers are facing is network issues and Mhm. students not coming online, and then when we ask them you didn't attend, sir network का problem है सर ना, वो डेटा नहीं है, ये नहीं, अभी पता नहीं है झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, बट मान के चलना पड़ रहा है कि सच ही बोल रहा है शायद, उनको Mhm. बहुत इंटरेस्ट है. और देन वी से अरे क्लासरूम में तुम लोग को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, अभी ऑनलाइन में इंटरेस्ट आ गया. So somewhere down the line, if it was only teaching matter where it was 100% theory like in schools, then online is working. But abhi kya ho raha hai, since we also have practicals to do, and electrical practicals ठीक है, वो कुछ ऐप लेके we can do a simulation, ohms law का कुछ simulation किया, ठीक है, but apart from them, Ohm's law. हाँ, समझो उसने कुछ रिवर्स कर दिया, he will not know exactly what can go wrong. वो फूट सकता है या कुछ blow हो सकता है, because electrical is such a subject that you cannot see electricity. ना वो Mhm. चालू करने के बाद भी until and unless the bulb is lighting, you will not know electricity इसमें घूम रहा है क्या नहीं घूम रहा है. या तो फिर वो शॉक लग के वो मालूम पड़ेगा हाँ अरे चालू है, तो ऐसा नहीं है ना. एंड सेकेंडली वो फिटिंग शॉप में जब तक वो घसेगा नहीं वो मेटल, सो उसको फाइल और वो हैक्सॉ के बारे में बता के कुछ ओके द टूल्स का नॉलेज, थियोरी नॉलेज वी कैन गिव देम, फाइल का एंगल क्या है, ड्रिल का एंगल क्या है, कौन से मटेरियल को कौन सा ड्रिल यूज करना चाहिए, ऑल दिस वी कैन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन ना, स्लो कौन से मटेरियल पे स्लो ड्रिलिंग, कौन से मटेरियल पे फास्ट ड्रिलिंग, टाइप्स ऑफ these all can be given theoretical, Mhm. but till that time that fellow does not pick up a mild steel जो वो हाथ में नहीं पकड़ता, he will not get that feel what he is going to do. So this is the Yeah. biggest hurdle we in the technical field facing that, and in the non-technical side, the theory side, we are facing issues of network issues, absenteeism during exams. I mean, sometimes we are having exams. You, as Naveen said,
that there are parents who are assisting the children. Children. तो अभी पता नहीं चल रहा है कि ये वी गिव देम एमसीक्यू क्वेश्चंस ना, चलो गूगल फॉर्म पे डाल दिया वन स्मॉल टेस्ट एंड फिनिश दिस टेस्ट इन 10 minutes, एंड बाद में पता चला कि वो पेरेंट्स उधर से प्रॉम्प्टिंग कर रहा है उनको एंड दे आर डूइंग इट, सो विच समथिंग विच इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल. Secondly, due to less bandwidth, now here we are looking at we are 4 of us, we are looking at each other. Just imagine 30 people joining in with this bandwidth. There's bound to be a lag and there's going to be Right. communication issue. तो हम लोग बोलते हैं कि वीडियो बंद करो. So there are some students when I came to know, वीडियो बंद करके चला जाते हैं लोग. हेलो, आर यू देयर, हेलो, वो पता माइक सबका म्यूट रहता है एंड आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स. फिर दूसरा कोई बोलेगा अरे सर वो अभी था, मैं बोला था मालूम है, वो है अभी भी, वो मीटिंग में है लेकिन वो बात नहीं कर रहा है. फिर आके बोला नहीं सर वो माइक का कुछ प्रॉब्लम. बोला ठीक है मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम. So these are small issues and I think we have learned to live with it now. It's almost a year now we are doing this. But there are some things which are not under our control. But I still feel online learning is not giving that impact कि जो live learning sessions का जो impact है ना, वो online पे नहीं आ रहा है. This is if you want to just give information, वो लेना है लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा. लेकिन क्लासरूम में कैसा, we insist कि हाँ भाई आपको पता चला, then there are questions coming from the students, which is not happening online पे. There are no questions आते नहीं है. Great. So before I give it to the Naveen or Varun to ask some questions on your other skills, I would like to thank you. Thanks for taking us back on our engineering drawing. Thanks us. मुझे तो Thank कुछ you. भी याद नहीं है. No, reminding us. Thank you for taking us back to the workshop and reminding us about the hexa and this all the tools, and thank you for Ohm's law physics. I don't know, I mean this Ohm's law, don't know when I heard last time and when I googled last time to search what is a Ohm's law. Yeah. So You don't need Ohm's law in oil and gas. yeah, exactly. But so thank you very much. I think I'll hand over to Varun. So Yeah, thank you Abhimanyu. while you were talking, and I just noticed one coincidence right now, that your some skills are engineering. We are engineers. Then first of one of your forte is music. We have a music passionate person in Naveen. Then it is teaching. We have a person who wants to be a big teacher and in some big institute. And you also have a writer here who is an aspirant writer, and you are a writer. So 3 people makes one person here right now. Oh, writer. See, Oh. just imagine. Only one I person didn't know that. no, Great. I just found out, and I don't know. Maybe Jason, if you want to share some things, just tell us about your book here. Before telling about this book, I just like to go back to how I came about writing. If it is okay with you all, I will share. Yes. Because this is very again a very fortunately or unfortunately का चीज है. ना हम लोग में क्या hidden है ना, ये हम लोग को खुद पता नहीं चलता है. I'll tell you. This started when I was in school in the 10th standard. और 10वीं का जो दो डेज which are there ना, वो ज़्यादा बोर्ड एग्जाम को कंसंट्रेशन पे नहीं रहता है. It is now you are going to miss your friends. ना, that is the last year, and आपको जितना मस्ती धमाल करने का है ना, 10th standard is the year to do it. वो बोर्ड एग्जाम आएगा तभी आएगा, देख लेंगे. So at that point of time, there were a lot of activities which were going on, na, masti, majak, dhamal, ye, wo. And of course, you also must be knowing that हम लोग सब टीचर का ना एक पेट नेम हम स्टूडेंट्स लोग रखते थे कि ना ये फलाना टीचर का ये नाम वो नाम, और वो टीचर को हम लोग वो नाम से सब पुकारते थे. I don't know whether the teachers knew कि हमको ये नाम से स्टूडेंट्स बुलाते. So at that time, what I had done is I had written one poem, and इतना गंदा poem था वो हर एक टीचर के ऊपर था, because
जो टीचर का नाम हम लोग ने रखे थे ना, आई डोंट रिमेम्बर दैट पोएम एग्जैक्टली, बट so and so teacher comes and she's howling like a cat and it was very rhyming ना, एक अच्छा पोएम था. एंड एनीथिंग अभी जैसे वीडियोस वायरल होते हैं ना, वैसा मेरा पोएम वायरल हुआ था पूरा. हम लोग के दो डिविजन थे, 10th A 10th B एंड आई वाज इन 10th A. एंड ये पूरा जो दैट पेज व्हिच वाज देयर, it went to all the students. We were totally around 100 students and all पूरा क्लास भर घूम के वो पूरा एकदम रोल होके ना ऐसा आया था मेरे पास. एंड आई वाज enjoying because everyone was ना पीठ पे ये कर रहा, अरे क्या पोएम लिखा यार, क्या पोएम लिखा. Unfortunately that poem landed in my class teacher's hand. Oh. And she called me and मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है. And she showed me that paper and said, Jacinto, my name is actually Jacinto, Jason easy होने के लिए कहते हैं. Jacinto, is this what you have written? And I shat in my pants. मैं बोला मर गया, अभी तो सीधा सस्पेंड हो जाऊंगा, बोर्ड एग्जाम गया भाड़ में, कुछ नहीं. And actually I was not a very mischievous student ना in the class. ये एक पर्ची ने मेरा, she said very calmly, says अच्छा लिखते है तू, can you correct this poem? I said what do you mean? नहीं, ये जो तूने सब बुरा भला लिखा है ना, you have written all nonsense, can you make something nice, keep the teachers ना same रखो, but कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या? तो मैं कर सकता हूँ. So okay, so tomorrow you are bringing me a new poem in which you will write something new. I was expecting a punishment, but I went home, and what happens now, working under pressure, I came to know that time ki what is working under pressure. See that poem which was written na, that was written with an open mind, when thoughts are flowing in ना, ये लिख रहा हूँ मैं, लेकिन अंडर प्रेशर वो कंपोज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि that time words are not coming. No, like अरे क्या लिखने का, अभी क्या लिखने का, क्या, तो like a writer's block हो गया. And I think I remember sitting right up to 1 o'clock, 2 o'clock in the night and correcting that thing, making it, now rewriting it, writing it, rewriting it, ये ठीक नहीं, ये ठीक. And तभी evaluate करने को भी दे नहीं सकते किसको. ऐसा नहीं कि WhatsApp पे डाल दिए, भाई जरा देख लो क्या कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. The only thing I have is that paper with me. And next day, and she told me first thing in the morning you will come and you will give me that poem, the changed poem. And I gave her that poem, and she said, okay, I will get back to you. Annually, we were having a class magazine which used to come out during our board exam. Na? So, कोई students used to give articles, photos, कोई drawing करके देता था, कोई क्या क्या करके देता था. मेरा वो पोएम उस क्लास मैगजीन में छप के आ गया. And I was stunned, and all the students were stunned. अरे तूने क्या किया है? Means हम लोग बताए एक चीज और इधर लिखा कुछ अलग. तो then I had to explain to them कि नहीं यार, this teacher told me to do. And we had a prelims. तो prelims का final day पे the principal walks up to me, Father Herman Castellino, and a very strict looking sort of a guy. And he said, Jacinto, you come to my office. मैं बोला लग गया अभी तो. गया. प्रिंसिपल ऑफिस में बुला रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो गया. तो गया उनके पास, अकेला हूँ. तो बोलता है तू पोएम लिखा क्लास मैगजीन में. बोला मर गया. आई एम डेड नाउ. So yes, did you write the poem? Yes, father, I wrote the poem. Okay. So he removed one big certificate and he gave me, and he said, you have got the best class magazine, best poem in the class magazine. करके मेरे को उसने वो बड़ा certificate. And I'm stunned, I'm stunned. And this is, I'm not joking, but this is a fact which happened to me. And later on now, वो इतना infect हो गया ना मेरे में, I started writing after that. And it only happened because of that positive nature of that teacher. Now, can you imagine, actual में अगर वो teacher ने वो
पोएम वही कंडीशन में अगर प्रिंसिपल को दिखाती थी, आई वुड हैव लॉस्ट दैट ईयर ना, मैं शायद मेरे को सस्पेंड करते थे या जो भी है. बट दैट टीचर, आई मीन आई रियली प्रेज हर. वो अब मिलो तो उनका पैर धोके मैं पानी पीऊँ, ऐसा टीचर है. she changed my entire life, you know. She came to know, she understood me, ये लड़के में कुछ ना कुछ creativity है, and that is what she put to me. And then later on I started writing a lot of things. And अभी pandemic में तो बीच में ज़्यादा ही हो गया था कि चलो भाई कुछ करते लिखते. And then big thanks to my sons who inspired me कि चलो अभी पब्लिशिंग भी करते हैं, बिकॉज नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ पब्लिशिंग. आपको कुछ खर्चा नहीं करना है. एंड ही डिजाइन्ड द कवर पेज, एक्चुअली डिजाइन्ड बाय माय सन. सो he helped me out to do the publishing, and that is how I got this book ready. So you were continuously writing since that particular. I was continuously writing, but no, it was in breaks. Maybe a small portion, but you were continuously कुछ poems लिख लिया, कुछ गाने लिख लिए, because that time when I was in the band I said चलो हम लोग गाने करते हैं. But that time my friends, नहीं ओरिजिनल कौन सुनेगा यार, तेरा मन का बात किसको सुनने का है. So now we'll do cover, जो cover versions है वो हम लोग करते हैं, हम लोग ओरिजिनल नहीं करते. But I still got those songs written down. Some poems are still there. Then there was a time, a small stint, I was in Goa for some time. So there I started writing small stories. I was very interested in storytelling. कि छोटा इसमें ना, ज़्यादा long novels वगैरह नहीं, छोटा इसमें. So short stories लिखने लगा मैं. So then I said चलो ये शुरुआत करती है. Now this I want to speak about this. Varun, you want to ask me questions on this thing? Yeah, I will just show that once again. Yeah, tell me about this book actually, because this Dear Sir, Letters to the Teacher. Yes. This is what should I say? I just have never read a heading like that or a title of a book like that, Letters to a Teacher, because I don't think anybody writes a letter. Absolutely. Everybody writes to mother, daughter, father. I think Jawaharlal Nehru wrote to his daughter or something. Nobody wrote to his teacher. Yeah, And yeah. You just wrote for your teacher. So Yes. what was it about? Is it about that teacher who put that worm of writing in your head, or for everyone? No, I'll tell you. Thank you very much for asking this question, Varun. This idea actually, what happened is now since I'm teaching in not the students who are there, many times it becomes difficult for the students to come and speak to the teacher for whatever issues. Either it is maybe related to the subject or maybe personal issue. Abhi now I tell them, अरे क्या हुआ, you absent, क्या हुआ? तो ना या तो लोग झूठ बोलेंगे या तो लोग चुप बैठेंगे, and becomes very frustrating when the student is quiet. Secondly, there's a language barrier. Right now अभी हम लोग English में we try and speak English to the students, but we know since most of the students they come from vernacular non-English school से, they have come from vernacular, तो उनको English में बात करने को बहुत दिक्कत होती है. They're terrified of speaking in English. So what I did is I did a small experiment with the students. I said, whatever you have to tell me, why don't you write to me? ना आप लिखो, anonymous लिखो. Maybe you don't want to tell your name कि मुझे ये परेशानी है. ना एक कोई बंदा क्लास में, there's a bully in the class who's bullying us, or there's a problem in the house, कुछ तो गड़बड़ है, financial problem है या जो भी है. So why don't you write a letter to me? And what I will do is I will give you a response, written response, what actions could be taken, or what advice, solutions. Thank you. Yeah. What advice I can give, what solution. So I behave more like a coach, like a mentor, like a solution provider. Yeah. So what I did was there was some real letters which came to me. And then I thought there are other issues also, apart from this, which the students don't want to say.
So so what I did, I formatted my own letters with those real issues, and I made around 10 letters where the student is asking the sir uh, to solve the problem, and the sir is giving a reply to now what could be the best way to solve this. Uh, if you see the summary also written, it is almost the same thing. So that prompted me to I had written some letters like that. तो मैं बोला कि चलो भाई 10 लेटर्स का ये करते हैं, and I'll publish it as a book and let's see. And this book is meant for the students actually. So I want to encourage them कि इसके बाद में अगर आपको इश्यू है, because they may not want to speak to their parents, some of the issues they cannot speak to their parents. I'll tell you one example. There was one girl and उसके family में her cousin brother was staying, and the cousin brother apparently was touching her inappropriately, which she couldn't tell her parents because the parents ने ही उसको लाके रखा था cousin को. So she came up to me and she told me कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है घर पे, एंड आई वाज अभी ठीक है, इट इज नॉट ओनली टीचिंग इशू, दिस इज पर्सनल इशू. एंड व्हाट आई डिड, आई हैड टू कॉल द पेरेंट्स एंड आस्क देम इन अ डिफरेंट वे ना, आर यू ऑल हैविंग इश्यूज एट होम, ओके कजन भाई है, आप लोग को उनको दोनों को साथ में रखते हैं, आप कंफर्टेबल है. एंड द गर्ल सेड शी इज नॉट कंफर्टेबल स्टेइंग विद दैट बॉय. And that parent at that time are wondering क्या हुआ, ये तो उसका भाई है. बोला I mean, don't think like that, listen to that girl. So there were some issues like that, and the parents came to know actually what is happening, and they had to pack that fellow back home. So there are some issues which the student, they have to get confidence, they cannot speak to their parents. So I give them an opportunity कि आप letter लिखो, anonymous letter लिखो. Maybe if you want to disclose your name, fine. If you don't want to disclose, I will still give you the reply. And empower them. Main thing is to empower them, to make them take their own decisions. So that is the reason this book was written. I mean, my head is exploding right now because you are using your writing skills to be a better teacher than what anybody else can imagine. Yeah. I mean, this is too much. No, Varun, I'd like to just add Like- to what you're saying is, see, there are a lot of times we get everything, na? We also need to give. तो also हमारे पास जो है, जो शायद दूसरों के पास नहीं है, so we can give. Now भी मैं पैसा तो दे नहीं सकता, I cannot give my money to someone else which is very dear to me. आप जेमते बोले तो जैसा करके हम लोग चला रहे. So what I can give, I can make someone's life better. Now how? Maybe sharing something, maybe giving them advice, smiling, spreading happiness. किसी का अगर मेरे वजह से अगर किसी का कुछ अच्छा हो जाता है, so that is I'm sharing and giving, and that is what I think everyone needs to do right now, कि देना सीखना चाहिए, because हम लोग के पास बहुत कुछ है रे, we are not giving, we are not sharing. Yeah, and every time when I say something, you said that I am just chadawing everything. You are very humble, and everybody Right. who will listen to it, and Correct. both of my colleagues here, they know now that आपको कोई नहीं चढ़ा रहा है. You are नहीं, just ऐसा very नहीं, humble, ऐसा and you are just, your nature is quite good. And uh, one last thing which I want to add is that you have a lunch date with your mother, Yes, not your yes. wife, Yeah. not your I'm girlfriend, sorry, I your didn't see mother. the watch, so I don't know what I time am it is. looking at the watch, and I just want to let you go and not let your mother wait. Yes. But when he said that lunch date with mother, I said, this also I have never heard someone saying that. So yeah, you teach us with every sentence of yours, and this podcast was the most interesting one in the aspect of how you have gone after your passion, Yes. Right. and not only one, every passion, and you have actually done something for that. We also have many passions. Some people collect stamps, some people write stories, some people go play cricket, but if they follow a passion, they run after. You have followed every passion. It's like जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, हर चीज हर Absolutely. चीज करना है. Absolutely. तो वही आपने किया है. Again, we are very thankful to you, Jason, that you came to our podcast, and we hope that
you will find another passion. As you said, another half century is remaining. You will find another passion, and we will talk about it in some few years. Yeah. That, yeah, I'm extremely pleased with what you guys are doing. Varun, Naveen, Abhimanyu, thank you very much. Even what Abhimanyu is saying is you took us back. But I myself went back. I mean, even I had not thought of so many things. Remembering that teacher, no, it is, even I became a little nostalgic. So thank you very much for taking me back into my time, and it was really fun. And Varun, I hope God showers a lot of blessings on your podcast. आप दूधो thank ना you. हो वो पूतो फलो. मेरे तरफ से all the best for you. You all are doing a wonderful job. You can finish now. Yeah, no, Thanks. I'm very thankful to you that you said such words, because you said you went back into the past, and as Abhimanyu said, this is the main motive of our podcast. Actually, we want to listen to stories of people like us and just share with each other. Somebody can learn, somebody can enjoy and get entertained, whatever. But this is the story, and this is the motive Yeah. of us here. Yeah. So with that, Jason, I will give you maybe 15 minutes so that you can get ready and go. And thank you very, very, very much, Jason, to tell us everything which you have told us. I never thought that I have met you once or twice in the past, and I never thought that you have such good stories. Otherwise, I would have sat with you and already We asked you can your we can make stories. time to sit. Well, thank you again. And viewers, I hope you enjoyed. Please like, share, and subscribe this channel. Watch it, you will enjoy it. And again, I'm saying, if you think that you can tell your story to us, just contact me through comment section, contact me on our email, it is also in the description, or just directly contact me if you know me already. So thank you with thank you very much. And with that, good night if you're watching in the evening, good morning if you're watching at the day, and all Good in all, afternoon if you're watching in the was in the afternoon. afternoon. And yeah, bye bye, Bye. take care. Thank Thank you Bye, so you. Jason. much. Thank you. Yeah. Bye. 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 Bye bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.